incomparable, legendary A.R. Rahman. जादू तुम्हारी नजर का बेचैनी कितने बढ़ाए तो होने लगी मैं थोड़ी थोड़ी है तेरा हुआ दिलमा I will get them up, oh mama get them up, get them up, oh mama get them up, I am gonna get them up, oh mama get them up, shuka chini get them up, oh mama get them up, I am gonna get them up, oh mama get them up, get them up, oh mama get them up, I am gonna get them up, oh mama get them up, shuka chini get them up, oh mama get them up. You got me feeling, you know, I see how they look up and down, I like it when you spin me around, only you can get me this wild, yeah. Edgy, show me that you're bad now. Body, baby, I got enough for ya. You know you're gonna love it when we out. You got me going, got me throwing, baby, yeah. Ay, mam, shigidi, nakuf, hoy, wigidi. Ay, mam, shigidi, fire, moto. Hiya, mama, tetema, oh, mama, tetema. Tipa, tetema, oh, mama, tetema. Hiya, tetema, oh, mama, tetema. Shuka chini, tetema, oh, mama, tetema. हम रजामंदर तू भी तो बंधु है उड़ती पतंग मैं हूँ जोगी मलंग समर्थ की तू इकलौती पसंद मत करिए जतन ना दिखा तू बदन मुझे चाहिए तेरी सोल चाहिए तेरा दिल मेरा एक ही है गोल कली कितने मिल जो भी तू बोल बस फटने दे बिल गेट्स तू खोल बेबी लेट मी इन शक ना तू कर शक दे तू माइका हनीमून पे चलेंगे जमाइका जमाइका चलेंगे जमाइका बनूं मैं जमाई तेरी माइका What is this? तुम भी आए हो यहाँ पे? Dude, क्या I तुम was भी told डांस to come करोगे? and sing over here. यार मुझे तो सीरियस एंकरिंग के लिए बुलाया गया है। क्या तुम डांस करो या कुछ चक्कर क्या है बॉस? यार ये कुछ डबल बुकिंग हो गई है तो हम एंकर्स ना यार मैं कंफर्म करने जा रहा था सीरियस एंकर्स हो कि मतलब यू आर गोइंग टू होस्ट और मी सीरियस शो करना है नहीं यार वी आर गोइंग टू हैव फन बड़ी क्या फन करें या सीरियस कुछ करें जल्दी से पहले तालियां हो जाए फन के लिए ओह फन हर बड़े सपने के पीछे एक दमदार टीम होती है और उस टीम को लीड करते हैं द धमाकेदार लीडर्स We start off with a bang. This is going to be a blockbuster. To finally put an end to all of this suspense, please put your hands together for the man who is redefining news for the entire generation of us, the CEO and editor-in-chief of NDTV, Mr. Rahul Kanwar. The dashing Rahul Kanwar, please, ladies and gentlemen. Oh my God. Yo, Kanwar. And joining him on stage is someone who is changing experiences for all of you, NDTV's Chief Experience Officer, Mr. Rahul Kumar Shaw. A huge round of Ladies and applause. gentlemen, please, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए. The dashing Rahul Kumar Shaw. Welcome, sir. Chief, now everyone is on the edge of their seats. Suspense बहुत हो गया. Are you going to reveal something big? Because we've really built it up to a crescendo. Well, let's just play it by the ear and see how it goes and see where this evening ends up. Wing it. Hopefully we'll have a good time. यार मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि होने क्या वाला है क्या करना चाहते हो Well, जो उसका इंतजार कर रहे थे अभी वो होने वाला है हम गुड टाइम्स का इंतजार करते हैं और देखिए क्या आ रहा है Ladies and gentlemen, please have a look.
makes life happen. Not what we hold on to, but what we share together. The spark that ignites, the rush, the now. The cheer that rises like a wave. A moment that takes your breath away. A rhythm that travels through 1,000 hearts. As one. Unforgettable, unmissable, unique. It is energy set free. It is life lived. It does not simply stay with you, it becomes you. This is us. Bold, spirited, unafraid. A new India rising in harmony. A moment where joy is timeless. This is how good times arrive. Electric, unstoppable, unleashed. All for that moment in time. Welcome to our world of experiences. Welcome to NDTV Good Times. You know, NDTV Good Times is something that we're supremely excited about, because so much of this generation is just about spending time on their mobile devices. And they're on Instagram, Meta, X, the NDTV app, I hope, and wherever else. And I think this generation really craves for a good time. The idea that you can move out of your mobile screen and be in the moment, be on the ground, living it and loving it. That is the broad idea behind NDTV Good Times, which I'm sure many of you sitting here know is one of the most marquee and iconic ideas that NDTV came up with. This is an idea that was born much before any of us sitting here were on the fray. It was way ahead of its times. And they had great shows, great vibes, vertical videos. This was Instagram before Instagram thought of Instagram. That's how far ahead of its time NDTV Good Times was. And over the years, in the way life is, it kind of went out of NDTV's hands, and just yesterday, we made a notification to the stock exchanges that we've got NDTV Good Times back into the NDTV fold. And I want to thank Karan Pal Singh, who's not here, he's in Dubai. He was our partner in NDTV Good Times. So Karan, wherever you are, on behalf of all of us at NDTV, very thankful to you and to your team at the Namay Group for partnering with us in this acquisition, and in some ways for allowing NDTV Good Times to come back home. Rahul Shaw and his team are going to curate some of the most magical experiences. A.R. Rahman on the banks of the Ganga in Varanasi. Sonu Nigam singing on the banks of the Dal Lake in Srinagar. These are genuinely magical, once-in-a-lifetime experiences, and it is the convening power of a media organization like NDTV that makes it even possible for stars to come together and to perform. Bring their best playbook out to the field and to ensure that all of you, all of us together have a good time. It's not as if we're moving away from the news in any way. Far from. We're not. We're still very strongly focused on the news. But the idea is to build a non-news muscle as well, something which really brings people together, ensures that they have a good time. So Rahul, why don't you tell us what's your big idea, and why do you think that what you and your entire team at NDTV are going to do will ensure that not just you, my friend, but everybody else has a good time? Well, like Rahul, you've already spelled it out in a way. We just don't want to do live entertainment. We want to create experience for you. हम चाहते हैं आप experience का अनुभव करें, अच्छे संगीत का, good music with experience, right? It's just not about reaching a stadium or a place to just watch concert. You should enjoy it. You should experience it. गंगा घाट, कश्मीर की वादियाँ, जैसलमेर के रेगिस्तान, गोवा के बीचेस, हम वहाँ पहुँचेंगे. हम आपके घरों तक नहीं पहुँचेंगे, हम घर के बाहर पहुँचेंगे, आपके गलियों में, आपके मोहल्ले में. So that's the idea. NDTV Experience will create a new zone which nobody has seen it. They can't do it, but they have to try doing it, right? That's the entire idea. That's what Good Times is all about. Infinite happiness,
infinite laughter, infinite joy. That's what Good Times will do. Do we have a website? Of course we do. And you know the kind of reach which NDTV has, the kind of storytelling ability that we've had, obviously it reflects on our platform, especially on our digital platforms, right? Now we've spoken about experiences, हमने experience के बारे में बात किया, जिक्र की, लेकिन till that reaches people with ease, how do you get to enjoy that experience? So with the interface that we've created, that you will see on our website, very easy to navigate, very easy to book your experience there. So that's the microsite that we're talking about. मैं सोच रहा हूँ कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, बहुत कुछ है पिटारे में। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू हुआ है क्योंकि मेन अभी ये हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, लेकिन उसके बाद से हम करेंगे फन। बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए आप बेसब्री से बैठे हुए इंतजार में, सभी आने वाले हैं। कोई ऐसी शख्सियत चाहिए whose songs are catchy, they can make people everywhere in the audience dance the night away. है कोई ऐसा? मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं या छोड़ दूं अभी। जिनके सुरों को कोई भी नहीं दे सकता टक्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज नेहा कक्कर। सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, दिल भर, दिल भर, Huge round of applause please for Neha Kakkar. आग लगाने आ गए स्टेज पर नेहा कक्कर। नेहा, एनडीटीवी के व्यूअर्स के लिए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे प्लीज? पहले तो मैं बहुत बिग थैंक्स बोलना चाहूँगी फॉर ऑलवेज गिविंग सो मच ऑफ लव, एनकरेजिंग फॉर एवर आई डू एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू ऑल गिव सो मच ऑफ लव, तो उसके लिए तो थैंक यू। सिचुएशन के हिसाब से Good वैसे नेहा question. बहुत माहिर हैं, कोई भी गाना कभी भी बना लेती हैं, कुछ भी बोल दीजिए। सपोज मान लीजिए कि ट्रैफिक में फंस गई, अब पुलिस वालों ने कुछ मांग लिया है, डीएल दिखाइए, चालान काटेंगे। अब इनको लगता है, ये तुरंत इनको रिकॉल होता है कि शी इज नेहा कक्कर, मैं तो सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। क्या करेंगे फिर आप, कैसे कर लेते हैं? तू प्यासा है मैं पानी सनम, देखेगा क्या जवानी सनम, तू प्यासा चालान बच गया है इनका। मैं पानी सनम, देखेगा क्या जवानी सनम। Guys, a round of applause is like standard. Huh? I shouldn't be having to say that. So let's put you in another tough situation. Okay. Right? So Sure. nightclub वाला आपने आंसर नहीं दिया. क्या? If you have to convince someone with two left feet, they say I can't dance. Okay. You're out on a date. क्या गाना गाओगे आप? सच बताऊं, सच इट कुड बताओ। बी एनी सॉन्ग ऑफ माइन, जितने भी मेरे अपबीट सॉन्ग्स हैं, इट कुड बी एनीथिंग, बट राइट नाउ सम द सॉन्ग दैट्स कमिंग वुड बी वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, प्यास जिसके हम न हो, साकी साकी ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। That's right, from Hollywood to Bollywood, from the Oscars to our hearts. This legend needs no introduction. Good Times is about experiences that move you, that leave a mark on you. And who better to be a part of this journey than the Mozart of Madras himself? The man who made the whole world stand up and notice Indian music. And tonight, we have something very special from him. He couldn't be here physically, but he has a very special message for us. Banaras,
the eternal stage of the gods. Where faith meets the power of music. And the maestro arrives, A.R. Rahman. NDTV is a pioneer in news, and I've been doing music. I'm an educator. I'm also into technology. I'm very excited to come with my band to perform at this holy city. So a concert on the Banaras Ghats as a stage for Sufi. When NDTV Good Times imagined this, many had their apprehensions, but not Mr. Rahman. I want to ask him, what really drew you to this unique idea? Music is a connecting force. It goes beyond all the man-made divisions. And the purity comes from the music itself, the performance, the composer. So I felt like it's a great reinstating fact, a reinstating idea to prove that music can do this. And I always love to see new people, new places, and it's a blessing to bring my spiritual music to this holy city. एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी आवाज बचपन से सुने आ रहे हैं और अब तक हमारे साथ है, हमारे कानों में गूंजती है, और अब तो वो जेंजी के भी फेवरेट हो चुके हैं। सोनू निगम के लिए जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Namaste, this is Sonu here, Sonu Nigam. Thank you for having me at the grand launch of NDTV Good Times. And we're making more special because we're announcing the celebration of 100 years of late Muhammad Rafi Sahab in Kashmir at Dal Lake. Can you imagine? The whole world knows my connection with my peer. I call him my peer, my guru, my inspiration, Muhammad Rafi Sahab. And it's not hidden from anybody. But celebrating his legacy in Dal Lake, in Kashmir, celebrating the zest of Kashmir is going to be really innovative. Who is going to come and shake up the stage tonight? It's a voice that हिलने वाला है angelic. बॉस स्टेज। It's a voice that is special, and it will have everyone swooning and dancing to his beats. Ladies and gentlemen, put your hands together for Jubin Nautiyal. तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ मैं तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा जो मैं चाहता ना हो मुझको तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर करना
कभी तुम मुझे नजरों से दो कित चलिए तू कित चलिए तू कित चलिए जान रहा है दिल ये तो जान दी है तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू कित चलिए तू कित चलिए तू कित चलिए काटूं कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रात लंबे यार कटे तेरे संगे यार के रात लंबे यार कटे तेरे संगे यार क्या बात सिंगर है यहाँ क्या लंबे यार एवरीबॉडी क्या लंबे यार एनडीटीवी कहना चाहूँगा कि गुड टाइम्स टू ऑडियंस बहुत सुरीली है आपकी a lot of love to you guys thank you so much for this beautiful evening and congratulations thank you so much What do you want to say about Good Times and NDTV? I would like to say that Good Times was being missed to begin with, and I'm so happy that it's back. And I've been told that you guys are coming with a very new and a fresh perspective about live concert, music, and a lot of fun. So I'm kind of looking forward to that. So my best wishes to Good Time for everything that you guys are coming with you. Ladies and gentlemen, one last warm round of applause for Jubin Notia. I want to call two absolute legends on stage. Ashu is actually going to be going all the way down there. Can we please have Anu and Shashi Ranjan on stage? Two people who changed the face of Indian television altogether. Huge round of applause. Anu Ranjan ji and Shashi Ranjan ji, please. Zordar taaliyan iske liye. Sir, say something about Good Times and your TV and this program. Ladies and gentlemen, I'm so pleased to be here tonight to see this enthusiastic, experienced, wonderful team of NDTV who's doing a brilliant work. मैं टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ बहुत देखता हूँ और ये टेलीविज़न वालों को बहुत शिकायत भी रहती है कि ITA का जो कन्वीनर है वो सीरीज़ कम और न्यूज़ ज़्यादा देखता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कमज़ोरी है। तो मैंने बहुत सारे राहुल को और आपकी सारी टीम को सालों साल से बहुत देखा है, सराहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि ऑलरेडी आई एम एविड वॉचर ऑफ NDTV. I watch it every day. It's looking amazing visually. It's looking amazing, the energy, the colors, the content, the language, the body language, everything is beautiful. And I really, really wish NDTV all the best and keep doing this great work which you are doing. And आज आपने गुड टाइम्स की शुरुआत की है. इसे भी मैंने वर्षों से देखा है गुड टाइम्स को और देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस ब्रांड के आने के बाद और जिस तरह का लाइनअप आप लोगों ने अभी शुरू किया है, कॉन्सर्ट्स, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर टेलीविजन ऑडियंस as well as for entertainment industry. He's the news junkie. If he says it's good, it's good, definitely. But where Good Times is, I congratulate you for that. You keep giving us a good time, we'll keep living the good times. And that's it. And I wish you all the best. And I know you're going to do fabulous. What a pleasure. Thank you so much for coming. And we hope you have a good time. Thank you. Thank you. This evening, it's turning out to be insane. Now I truly understand what infinite good times actually means. And we're just getting started. The next announcement isn't about one artist. Not one. Twins are here kya? Yeah, triplets. Triplets of talent, 3 legends. 3 legends? मैं समझ गया तो किन की बात कर रहा है भाई? Really? 100% finally. The trio that literally defined the sound of modern Bollywood for our entire generation. From making us cry our hearts out to Kal Ho Na Ho, to making the entire nation dance on Kajrare, their musical genius knows no bounds. But are you sure ये musical genius है कौन? Suspense खत्म कर दो.
Well, these legends are currently rocking in some other part of the country, but they have sent a very special message for us. Have a listen. Three magical friends, uniting two diverse generations with one common love, music. ¿Quién eres tú? Un viaje está. He removido cielo y tierra y no te encontré. मेरा जो रिश्ता है एनडीटीवी के साथ वो बहुत बहुत पुराना है और मैं इतना खुश हूँ कि ये एक नया जो जर्नी है वो शुरू होने जा रहा है एनडीटीवी के साथ और उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस wonderful new dimension of NDTV. You know, NDTV Good Times is all about bringing people together. All of us here sat in this room. Shankarji, if you could jam with one legendary artist, who would it be? Oh my God. मुझे तो music world में any artist I'm happy to jam with, whether it is there are singers or whether they are musicians or whether they are masters. Like मैंने बरसों से 25-30 साल से मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ मैंने जैम किया है या इतने सारे क्लासिकल आर्टिस्ट हैं. सिल्वर गणेश हैं, गणेश कुमार. हमको लास्ट ईयर ग्रैमी इसके लिए मिला, हमारा जो ग्रुप है शक्ति इसके लिए. या मेरे जो दो पार्टनर्स हैं एहसान लॉय हैं जिनके साथ मैंने 30 साल से मैंने म्यूजिक दिया है, उनके साथ जैम किया है. या इतने सारे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री के, जैसे सोनू निगम है, अरिजीत सिंह. जब के ही वाज ऑन दिस प्लैनेट तभी उन्होंने हमारे साथ बहुत गाया है. वेदर श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, हर्षदीप कौर, इतने सारे कमाल के आर्टिस्ट हैं हमारे इंडस्ट्री में. तो सभी के साथ मैंने जैम किया है. और फरहान के साथ मैंने बहुत काम किया है, फरहान अख्तर. So I'd love to jam with any of them. All right, one last question. With platforms like NDTV Good Times opening doors for so many of us, do you think talent from smaller towns will really get the big stage? NDTV जैसा प्लेटफॉर्म अगर इस तरह का मौका दें तो we are reaching out to the interiors of India and showcasing our talent and also searching for talent. हम talent hunt करेंगे क्योंकि just because एक बच्चा एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ही ऐसे बच्चे से कम talented है जो शहर में पैदा हुआ है. Opportunity should be given and I'm really looking forward to this. और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हम बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो इंटीरियर्स ऑफ इंडिया हैं, उनको भी मौका मिलेगा. एनडीटीवी के दर्शकों के लिए क्या प्रॉमिस करते हैं और किस तरह का जो म्यूजिक है वो बदलाव चेंज ला रहा है भारत के लिए भी ग्लोबली? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है एंड द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग इन मल्टीपल सिटीज ऑल ओवर द कंट्री. सिंस द कॉन्सेप्ट इज सो न्यू, उनके लिए मैं गाना गाऊंगा कि हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना. कोई कहे कहता रहे इतना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना. A huge round of applause please for Shankar Mahadevan of Shankar, Ehsan and Loy, the trio. Now, we got a little bit of surprises over here. We wanted to spring up some surprises, so we got someone to come back with an audience poll for a very special performance. Can we please have the person who Ashu's been trying to grab all the attention from, the one and only Neha Kakkar back on stage. Kakkar. Please welcome Neha Kakkar. Hi, you beautiful people. I've been asked to sing something for you all. वक्त का करम है कि तू बैठा है मेरे रूबरू, है इश्क कितना तुझसे लफ्जों में कैसे मैं कहूँ. एक नजर तू देख ले बस मेरी ओर में, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर. मोहब्बत सच मैंने
हो किस्मत दे मारे असी की करिए किस्मत दे मारे असी की करिए किस्मत दे मारे हो असी की करिए किस्मत ते किस दा जोर है माही वे माही वे माही वे Thank you so much. Please come. Neha, that's absolutely amazing. I mean, Thank you. honestly, to come on stage like that on Code Row performance, it's never about auto-tune. Here at NDTV Good Times, we give you real talent, real And we stars. give you only good times. Only good Only times. good times. Neha? There's never a smoother जाते plug जाते जाते than the one जाते we जाते just heard. जाते 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 पानी ब्लू कुछ है आज क्या ब्लू है पानी 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 यो, यो। और दिन भी सानी 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 आ जाओ NDTV पे गुड टाइम्स जी लो फूटी किस्मत होगी तेरी जो तू नहीं है बात न मानी वहाँ 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 Thank you so much. Absolute round of applause Thank you so for Neha much. Kakkar. But all these incredible experiences need to reach you. And for that, we've partnered with the best, absolute best in the business. And when we talk about the best in the business, we have come to to the have point. someone with the right technology, with the right platforms, with Now- the right credibility. So what we are going to do over here is welcome our ticketing partner, District, who will bring good times directly to your fingertips. District by Zomato, Kunal Khambati. It started with one name in 2008, and then we changed the way we eat, shop, and supply. Eventually, they became one powerhouse, Eternal. India's largest new age tech organization by market capitalization, our next move had to go beyond convenience, something that makes people come together. And tapping into the culture of going out did just that. The energy, the passion, the moments that stay with you forever, we're here for it all. District is turning India into a global destination. Big names, bigger moments, they're all here. The future of going out is District. Friends at District by Zomato, Kunal Khambati. Kunal, what a pleasure to have you. Kunal, you pulled off some of the biggest events already at District, and we're really excited to partner with you. What excites you about this collaboration the most? Thank you, firstly, for having me here. And Rahul, both the Rahuls, thank you very much and congratulations. I think the most exciting thing about this partnership is, you know, a big giant like NDTV coming into the fray of live events. So firstly, welcome to the live entertainment industry. NDTV has been, of course, known since the 1990s to be, you know, spreading news and information through the air. We're very excited and happy to collaborate and bring that to the ground and have some fun with it. Kunal, you're going to have some high demand when we get all of this on the road with you. No doubt. How do you guys really plan to cope with that? I know District has a very strong tech team out there, but with what's coming your way, I know you're excited, but how are you prepared? I mean, we're not, right? This is a big giant coming into the fray, like I said, but what's very exciting is, of course, everyone's been to concerts and seen A.R. Rahman in the past, but you know, what NDTV Good Times is going to bring to the picture, something completely unique, and in the true form of an experience for audiences in a way that they've never seen before, so that's the most exciting part. उनके लिए क्या मैसेज है जो टिकट्स मिस कर देते हैं या फिर उनके लिए क्या सुविधा है आपके ऐप के थ्रू ऐप की खासियत क्या है आपकी Zomato? Oh, so the app is made for consumers, right? So it's District app. The District app. The District by Zomato app is made for consumers. There are some very exciting features that will allow consumers to buy tickets and enjoy the journey faster. Something we've done recently is travel integration for all the unique destinations where NDTV Good Times is going to do events. So we have a Make My Trip tie-up. You can book your ticket, you can book your hotel, and you can even have favored EMI options to pay for your ticket, so you're not worried about letting all that big money go in one shot.
So yeah, the journey is seamless. It's all on the app, and it's very easy and exciting to use. More power to you, Kunal. A huge round of applause, please, for Kunal. And Thank you. We're looking forward to doing good things and good times together. Cheers, man. Likewise. थैंक यू कुणाल, थैंक यू। आप उनको बुलाने जा रहे हैं स्टेज पर जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आप उनको सिंगर कह लीजिए, म्यूजिक कंपोजर कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, लिरिसिस्ट कह लीजिए, वो ऑल इन वन है। आनंद जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, सर एक छोटी सी कोशिश थी। राहुल जी एंड दूसरे वाले राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड एनडीटीवी के साथ मेरा इस मकाम पे आज के दिन में जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य वाली बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान का वक्त अच्छा होता है, जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वक्त नहीं होता। जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो उसके पास सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। लेकिन गुड टाइम्स वाले वक्त के साथ हर किसी के पास वक्त होगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ये वक्त ही उन्हीं के लिए है कि जो अपनी ज़िंदगी में जितनी मर्जी मेहनत करे, लेकिन सुकून के कुछ पल देने के लिए आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, इट्स अ ब्रिलियंट सर। थैंक यू सो मच सर, लव यू। क्या आज भी गजब, शानदार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, चुनाव तो हमेशा आते हैं, लेकिन सबसे जो मैं फिर से बोल दूं, चुनाव हमेशा आते हैं, अक्सर आते हैं, चाहे राज्यों के या फिर देश के, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक विश्लेषण कौन करता है? आप टीवी पे जो देखते हैं। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। नंबर 1 चैनल के चुनाव में कौन बाजी मारे? चुनाव से आप जुड़े हुए हैं, चैनल के चुनाव में कौन बाजी मारे? सेट सिंपलीफाई करूं एंड इसने एआई का उल्टा किया। यू मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स, कीप द सिंपल आंसर। So let me tell you about NDTV means no nonsense. I've been watching NDTV and associated with NDTV for a very long time. So 3 things comes to my mind. First, as I mentioned to you, NDTV means no nonsense. I'm sure you must have been watching multiple channels, but you may not have ever watched any nonsense on NDTV, that's for sure. सर बाकी जगह भी आप बैठते रहे हैं तो सोच लीजिएगा। The second thing is initiated and started by a cephalogist, and I myself being a cephalogist, so that heart is with the NDTV always. And the third and most important thing, Parivartan is live, and now Rahul, Kamal and myself particularly has spent a lot of good time together. And I feel it is going to be continued in the future. तो मुझे ऐसा लगता है कि this Parivartan is going to make more good times again and again. Thank you very much. जोरदार तालियां प्रदीप गुप्ता जी के लिए। तू मेरी खामोशी है Mr. Worldwide, तू मेरी मदहोशी है India, तू मेरा है अफसाना Making me so happy, shaking my body Hey, hey, yo Burn it up Fire Oh, yeah, la cosa se puso caliente Oh, yeah, la cosa se puso caliente गोली गोली सीने बढ़ जावे मुंडे मरदे स्लोली जैसे नागिन लड़ जावे नी तू यस यू ब्रो मी आवे गल सुन ले नारे आग लगे दुनिया में जो तू मेरी हो जावे मैं तू रहती है I'm gonna make you crazy बेटा भी कहती है I'm gonna make you my baby I keep praying all day all night long
like this, make it. हजू मैं गलियां की बीट पे लचके तेरी सुपर डुपर कमरिया